Hello students, good morning. We completed our chapter number 5th. Chapter number 5th, learn to use MS Word 2007. Now, today we are going to learn exercise of chapter number 5th. So, first question was there MCQs, that means multiple choice questions. Okay, so in section A, MCQs, take the correct option. Okay, so first was there MS Word is an blank software. MS Word is an blank software. So answer was there application. MS Word is an application software. MS Word is an application software. Okay, the spelling was there APPLICATION, application. MS Word is an application software. MS Word is an application software. Okay, second was there blank is present on the title bar. Blank is present on the title bar. So answer was there quick access bar. Okay, quick access bar is present on the title bar. Quick access bar is present on the title bar. Quick access bar is present on the title bar. Okay, then spelling was there QUICK, quick, ACCESS, access, TOOL, tool, BR, bar, tool, bar. Okay, so quick access toolbar is present on the title bar. Quick access toolbar is present on the title bar. Okay. Third was there to close MS Word application, click Office button, right? Then blank button. Okay. To close MS Word application, click Office button, then blank button. So answer was there exit word. Okay, answer क्या आएगा exit word. Spelling was there EXIT, exit, WORD, word, exit word. Okay, to close MS Word application, click Office button, then exit word button. Okay, to close MS Word application, click Office button, then exit word button. Okay, answer आएगा exit word. Then after fourth was there which of the following is not a word processing software? Which of the following is not word processing software? So answer was there Paint. Spelling was there PAINT, Paint. Which of the following is not word processing software? So answer was there Paint. Okay, which of the following is not word processing software? तो इसमें आंसर होगा Paint. ओके, MCQs हम फिर से एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट, MS Word is an blank software. Answer was there application. MS Word is an application software. Second was there blank is present on the title bar. So answer was there quick access bar, quick access toolbar, QUICK, quick, ACCESS, access, TOOL, BR, toolbar. Quick access toolbar is present on the title bar. Third was there to close MS Word application, click Office button, blank button. So answer was there exit button. Okay. Fourth was there which of the following is not word processing software? Answer was there Paint, PAINT, Paint. Okay, which of the following is not word processing software? तो उसमें आंसर आएगा Paint. Okay, this is the section A. Now we have to learn section B. Fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. So our first blanks was there. A blank helps you to type your application, letters and essay. Okay, A blank helps you to type your applications, letters and essay.
तो उसमें आंसर आएगा वर्ड प्रोसेसर, WORD, वर्ड PROCESSOR, वर्ड प्रोसेसर. ओके, तो a word processor helps you to type your applications, letters and essay. ओके, इसका आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें आएगा वर्ड प्रोसेसर. ओके, a word processor helps you to type your applications, letters and essay. Okay, second was there, the open option appear on clicking blank button. The open option appear on clicking blank button. Answer was there office. Okay, so the open option appear on clicking office button. Okay, the open option appear on clicking office button. Okay, then after, you need to blank your file before closing them. You need to blank your files before closing them. So answer was there save. Okay, हमें हमारा जो कुछ हमने जो प्रेजेंटेशन रेडी किया है, फाइल जो बनाई है, तो उसे क्लोज करने से पहले, बंद करने से पहले क्या जरूरत होती है? उसे सेव करने की. ओके, तो यू नीड टू ब्लैंक योर फाइल्स बिफोर क्लोजिंग देम. सो आंसर वाज देयर सेव. सो यू नीड टू सेव योर फाइल बिफोर क्लोजिंग देम. You need to save your files before closing them. Fourth was there, blank the text before deleting it. Blank the text before deleting it. Answer was there select. Select the text before deleting it. Okay, select the text before deleting it. हमें कुछ भी डिलीट करना है तो उससे पहले जो टेक्स्ट हमें जो वर्ड डिलीट करना है उसके ऊपर सिलेक्ट करना होगा, तभी हमारा जो हमें जो डिलीट करना है, जो हमें इरेज करना है, वो हम इरेज कर सकते हैं. ओके, so fill in the blanks once again. A blank helps you to type your applications, letters and essay. Answer was there a word processor. So a word processor helps you to type your application, letters and essay. Second was there open option appear on clicking blank button. Answer was there office. The open option appear on clicking office button. Third was there, you need to blank your files before closing them. So answer was there save. You need to save your files before closing them. Fourth was there, blank the text before deleting it. Answer was there select. Select. Select the text before deleting it. Select the text before deleting it. Now section C was the match the following. Okay, match the following. So already answer was there. Okay, first was there control plus click. तो वहां पे आंसर आएगा टू सिलेक्ट अ लाइन. ओके, वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्लिक. हम जब कंट्रोल प्लस क्लिक वो प्रेस करेंगे तो किसके लिए? जब हमें लाइन सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस क्लिक वो हम उसमें क्लिक करेंगे. ओके, तो फर्स्ट का आंसर है कंट्रोल प्लस क्लिक. तो आंसर वाज देयर टू सिलेक्ट अ लाइन. सेकंड वाज देयर शिफ्ट प्लस अप एरो की. शिफ्ट प्लस अप एरो की. ओके, तो उससे क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस अप एरो की. जो जब हमें कोई लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, सिलेक्ट ऊपर वाली जो कोई भी लाइन सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस अप एरो की. वो वहां पे है वह, ठीक है. वैसे हम अप एरो की सिलेक्ट करेंगे जब हमें ऊपर की लाइन को सिलेक्ट करनी है तब. तो शिफ्ट प्लस अप एरो क्लिक, दैट मीन्स सिलेक्ट टू लाइन अपवर्ड. ओके, थर्ड वाज देयर कंट्रोल प्लस ए. तो उसका आंसर है टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट. फोर्थ वाज देयर शिफ्ट प्लस राइट एरो की.
shift plus right arrow key. So answer was there select letters to the right. हमें राइट साइड का जो भी लेटर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे शिफ्ट प्लस राइट एरो की. ओके, शिफ्ट प्लस राइट एरो की. तो उसका यूज है सिलेक्ट लेटर्स टू द राइट. ओके, राइट वाला जो लेटर क्लिक सिलेक्ट करना है उसके लिए सिलेक्ट शिफ्ट प्लस राइट एरो की. ओके, सो वंस अगेन कंट्रोल प्लस क्लिक टू सिलेक्ट अ लाइन. लाइन सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस क्लिक. सेकेंड वॉज देयर शिफ्ट प्लस अप एरो की. सो आंसर वॉज देयर सिलेक्ट अ लाइन अपवर्ड. ऊपर की जो भी लाइन हमें क्लिक सिलेक्ट करनी है इसके लिए तो अपवर्ड एरो शिफ्ट प्लस अपवर्ड एरो की. देन आफ्टर कंट्रोल प्लस ए. सो टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट. कोई जो भी डॉक्यूमेंट हमें करना है तो कंट्रोल प्लस ए. देन फोर्थ शिफ्ट प्लस राइट एरो की. तो सिलेक्ट लेटर्स टू द राइट. राइट साइड का कोई लेटर सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे शिफ्ट प्लस राइट एरो की के पर प्रेस करें. शिफ्ट प्लस राइट एरो की सिलेक्ट लेटर टू द राइट. कंट्रोल प्लस ए टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट. Shift plus up arrow key to select the line upward. Then control plus click to select a line. Okay. So here we completed exercise. Some question answer was remain. We will do complete it in our next video. Okay. I hope you do practice at your home. Thank you for watching. Thank you and have a nice day.